Assalamu alaikum and welcome to the second lecture of English essay by CSS Factory. In the previous lecture, it was a general orientation about English essay regarding CSS, and some frequently asked questions were answered along with some right-hand rules, or rather rules of thumb. ठीक है जी. I hope you've all watched the previous video. If you haven't watched it, kindly do visit the link in the description so that everything is clear. So we would begin today's lecture on along the same lines. We'd be choosing the same topic, that is water crisis and national unity. And the reason is pretty much I attempted this topic and it's pretty easy to understand and explain as well. ठीक है जी, let's begin with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So today we're going to brainstorm and actually prepare a web plan, and we're going to make a cluster, and this should be on the last page of your answer sheet, and I've written it over here so that you don't have any confusions whatsoever. ठीक है जी, आपकी आंसर शीट का लास्ट पेज होगा ये. इससे पहले आपने क्या करना है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ गाइडलाइंस जो थी उनमें एक ये भी थी कि आपने ऐसे कौन सा चूज करना है जिसके साथ आप इंसाफ कर सकें, जिसके तमाम कीवर्ड्स आपको क्लियर हों. ठीक है, तमाम कीवर्ड्स से मुराद जिस तरह यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, वाटर क्राइसिस है और नेशनल यूनिटी है. तो हम क्या करेंगे, इस बेस पे हम अपना ऐसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हो कि हम उसको 3 घंटे एक्सपैंड कर सकें और आपस में कीवर्ड्स को लिंक भी कर सकें. So let's begin. As I previously told you, excuse my throat please. So as I explained before, what we're going to do is we're literally going to put a circle around and write our topic in between. So let's put our circle over here. I'm going to write my topic. अब इसकी लॉजिक क्या है टॉपिक को यूं लिखने की और एक सर्कल लगाने की? It's more of a visual representation, and visuals they kind of help you in gathering thoughts, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में रहेगा हमेशा कि टॉपिक सामने लिखा होगा और आप जो है relevant thoughts gather करने में आपको आसानी होगी. So here I have my keywords, and to just focus on it, इस पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज 3 घंटे का जो ऐसे है उसमें आपकी रेलेवेंसी रियली मैटर्स, एंड दैट्स वेयर एवरीबॉडी डिफर्स. कि जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो एक लंबे टाइम तक अपने रेलेवेंस को और अपने स्कोप को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये उसका अच्छा तरीका है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके सामने कि आप अपने कीवर्ड्स को दिमाग में रखते हैं. सो लेट्स बिगिन. इट्स घड़ी देख लें आप लोग, इट्स 3:20. तो आई वुड एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 20 मिनट्स मेरे जितने भी रॉ आइडियाज हैं जो मेरे दिमाग में आएंगे इससे रिलेटेड वो मैं जॉट डाउन कर सकूं. एंड सिंस वी आर ऑन अ लैपटॉप, डोंट वरी इफ यू हैव अ बिट ऑफ डिले, क्योंकि लिखने में ऑब्वियसली चीज़ जल्दी होती है और लैपटॉप पे स्क्रीन पे टाइम लगता है टाइप करने में और विजुअली इसको ड्रॉ करने में. ठीक है जी. So let's begin. Okay, for any essay that you choose, how you have to choose it, I think you're clear about it. So once you've chosen your essay, what you'll do is you'll start brainstorming, and the first thing that comes to your mind is I need a good introduction. ठीक है जी, introduction मेरा अच्छा होना चाहिए और वो स्पेसिफिकली यहाँ लिख के आपके दिमाग में चीज़ रहेगी कि आपने एक इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना है. मैं क्या करता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन पहले ही सोच लेता हूँ कि थोड़ा सोच के आपके ऐसे का पेज है. Just
What's the first impression that you give to the examiner? So किस तरह के sentences होने चाहिए? Try to make a mature sentence something that is metaphoric, something that tells the reader that you have good English skills. तो यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, something like Pakistan. Although Pakistan was a gift of unprecedented, जो पहले कभी नहीं हुई, struggle, ठीक है जी, persistent endeavors and unimaginable sacrifice, which is actually true. तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ें. Unimaginable sacrifice. अच्छा, although Pakistan was a gift of unprecedented struggle, persistent endeavors, and unimaginable sacrifice, some perils, problems, दोनों ठीक है, some problems came as part of the package. I really like this term, I don't know why. अच्छा, यहाँ पे अब ये सेंटेंस अच्छा क्यों है? इसे भी अच्छा बना सकते हैं आप. ये वाला अच्छा क्यों है कि अब ये थॉट प्रोवोकिंग सा है. ऑल्दो से स्टोर है, कहेंगे जी ऑल्दो पाकिस्तान वाज गिफ्ट, तो कह रहा है अच्छा ठीक है, हाँ एक बड़ी स्ट्रगल का गिफ्ट था, तो ये क्यों कह रहे हैं ऑल्दो? ऑल्दो कह रहा है इसलिए क्योंकि इतनी कुर्बानी के बाद भी कुछ मसाइल फिर भी हमारे पास आ गए, और उनमें से came as part of the package, water crisis being one of the you could use a good word here, vanguard, चला गया, ठीक है जी. Now this is an example of a good topic sentence for your essay, ठीक है जी. और ये इंट्रोडक्शन में क्यों है ये टॉपिक सेंटेंस, की ये बहुत जनरल है, और यहाँ पे हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हमने वाटर क्राइसिस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है. थोड़ा सा मेटाफोरिक की तरफ जाएं अगर, तो लेट्स मेक अनदर सेंटेंस एंड लेट्स, अच्छा जी, एवर सिंस द creation of Pakistan, some thorns came studded into its national fabric. ये metaphoric हो गया, ठीक है जी. Since the creation of Pakistan, some thorns came studded into its national fabric. Water crisis being one of the crucial ones. अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को एक गाइडलाइन देना है कि कोई भी टॉपिक हो, आप हमेशा एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा फोकस करें, कोई अच्छा सा सेंटेंस लिखें. अब इसका एक नॉर्मल सेंटेंस क्या हो सकता था, जैसे ये जी, वाटर क्राइसिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान. अब ये इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन दिस डज नॉट कम एट पार विद द लेवल ऑफ CSS, ठीक है जी, कि वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी मुल्क की क्रीम आएगी और अच्छे एसेज लिखेगी, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है. अच्छा जी, नेक्स्ट. Now we're going to write down anything that comes to our mind, and following the lines of our orientation lecture, उसमें एक बात मैंने की थी, वो ये थी कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके जहन में आ रही है, सबसे पहले आप वो लिख लें, ताकि क्योंकि अभी आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आप थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, और साइकोलॉजिकली आप पे कोई बर्डन नहीं होता. तो जब टाइम कम होता जाता है तो इंफॉर्मेशन आपकी लूज होती जाती है, ठीक है जी. तो बेहतर है आप पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लिख लें. अब इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे अभी मैं अपने पहले कीवर्ड पे फोकस करता हूँ, वाटर क्राइसिस. तो लेट्स कम अप विद सम फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट वुड हेल्प आवर एसे स्टैंड आउट, ठीक है जी. तो खैर मेरे दिमाग में आता है जी कि मैं बैकग्राउंड बताऊंगा थोड़ा वाटर क्राइसिस का, ठीक है. इसमें मेरे पास फर्दर अगर मैं इसका क्लस्टर बनाऊं तो बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी,
मेरे पास आ जाएंगी इंडस वाटर ट्रीटी आ जाएगी, ठीक है जी, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, ठीक है जी, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। और इंडस वाटर ट्रीटी से मुझे और क्या चीज़ें पता चलनी चाहिए एग्जामिनर को जो मुझे बतानी है, थोड़ी सी डिटेल में यहाँ डालता हूँ। वो क्या होगी कि जी वर्ल्ड बैंक वॉज द आर्बिटर, ठीक है जी। फिर क्या मैं बता सकता हूँ कि रीज़न, मैं कहूँगा रीज़न ऑफ द ट्रीटी, रीज़न एंड इम्प्लीकेशंस, ठीक है जी। और मैं क्या कह सकता हूँ, चलें ठीक है, अब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बस आप जो थॉट आएगी आपके दिमाग में आप उसको लिखते जाएंगे, डजेंट मैटर कि वो रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड एज इन कि ऑर्गेनाइजेशन है उस थॉट की स्ट्रक्चर्ड है या नहीं। एकदम से आप इंडस वाटर ट्रीटी का ख्याल है आपने लिख ली, अब फर्स्ट करें आपको फौरन ख्याल आ गया कि जी यूएन की एक रिपोर्ट आपने पढ़ी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कुछ फैक्ट्स फिगर से आप फौरन से वो लिख लें। So that's the beauty of brainstorming. You don't need to worry about anything because all you're doing is gathering up ideas. So let's say 250,000 children, ठीक है जी, die below the age of 5 years, ठीक है, due to lack of clean water. No, sorry, due to lack of due to waterborne diseases. Due to waterborne diseases, ठीक है जी। एंड अगेन जब आप कोई ऐसा कोट करेंगे फैक्ट या फिगर, यहाँ पे तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप उसको ऐसे में लिखेंगे तो you wouldn't directly say that 250,000 children die. You would provide a proper citation. तो इसको मैं वहाँ पे किस तरह लिखूंगा, according to a 2016 report issued by World Health Organization, 250,000 children die below the age of 5 years due to waterborne diseases in Pakistan, ठीक है जी। तो according to करके आप इसको अपने असल ऐसे में लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा जी, any other facts and figures that I remember, I'm going to continue writing them down. Let me say that 22 million people, अभी आप गौर करें तो हम अपने पहले कीवर्ड पे फोकस करें, नेशनल यूनिटी को हमने छेड़ा भी नहीं है। तो 22 million people don't have access to clean drinking water, ठीक है जी, near their homes. Now that is something वेरी अलार्मिंग कि हम किस किस्म के मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि हमारी 22 मिलियन लोगों को साफ पानी घर के करीब नहीं मिलता, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आपको मुझे एक और सब पॉइंट दिमाग में आया, ठीक है, तो लेट्स पुट इट अप इन आवर क्लस्टर। व्हाट इज दैट के कराची माफिया, ठीक है जी। सो व्हाट्स द रीजन कि वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है करीब, तो वो एक माफिया बन गया जो आपको पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और क्या मसले आएंगे आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आ गया, ठीक है, इससे रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ लिख लूंगा। वो क्या है, वो है जी कि यूनिसेफ यूनिसेफ की एक रिपोर्ट इन 2016 says कि 50% of schools and school going children do not have clean drinking water, ठीक है जी। Another thing that I remember from this now is कि जी मैं कहता हूँ हॉस्पिटल्स की एडमिशन की कोई बात है, क्या है क्या है, ओके, ऑलराइट।
All right. So I have some more points related to this. Let's add them up. Let's say that WHO, World Health Organization, 2017 or 18, I guess, report says that 25 to 35% of hospital admissions in Pakistan are related to waterborne infections, related to drinking water, which is something very, very sad. Then again, there is another statistic which says that 60% of 60% of infants, छोटे बच्चे, 60% of infants, infant deaths, ठीक है जी, are due to waterborne diseases. ठीक है जी, waterborne diseases. अच्छा जी, अब हम क्राइसिस की बात करें. मैंने एक और इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में फौरन आ गई. वो क्या थी जी, कि जब आपके मुल्क में वाटर क्राइसिस होता है तो उसको नापने के लिए एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं वाटर स्ट्रेस रेशो. ठीक है, जो पाकिस्तान का इस वक्त है, आई गेस आई रेड इट बैक इन 2016, तो अब आई डोंट नो, बट इट्स 4.8, 4.87 या 4.89. अच्छा, अब क्योंकि this is a jargon, this is a technical term, so if you're going to use this in your essay, तो you have to explain what it is. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर ही लिख लेंगे कि definition, ताकि आप भूलें ना. ठीक है जी, वाटर स्ट्रेस रेशो की definition. ठीक है जी, और ये जहाँ तक मुझे याद अभी है, as far as I can recall, water stress ratio has something to do with the population versus fresh water resources जो एक मुल्क में होते हैं. तो 4.87 का आप रफली इस तरह समझें कि 4 आदमियों के लिए एक साफ पानी का गिलास है. तो that is what it means. ठीक है, along the same lines, let's gather some more facts and figures, because the facts and figures are the thing that you need, honestly. ठीक है, लफ्ज कोई भी लिख सकता है, तो काम की चीजें कौन बताता है, that really matters. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जी WHO's रैंकिंग. ठीक है जी, वो क्या है कि पाकिस्तान is the 28th most water scarce country in the world. ठीक है जी, no, 28th most water scarce country in South Asia. ठीक है जी, and among the 36 water stressed countries in the world. तो यहाँ देखें, वाटर स्ट्रेस का लफ्ज आ गया यहाँ, हमने ऊपर इस चीज को कवर किया है कि जी वाटर स्ट्रेस क्या होता है. यहाँ पे राशन लिखा गया है गलती से, इट्स रेशो, सॉरी. ऑलराइट, ओके, कीप जॉगिंग योर ब्रेन, वी डोंट हैव टू स्टॉप. ठीक है, हमारा ऐसे चल रहा है, हमारा एग्जाम है, टाइम लग रहा है, तो वी विल राइट facts, more information, more ideas. अच्छा जी, IMF की एक रिपोर्ट कहती है, IMF 2018 report says, 2018 report says कि रिपोर्ट का नाम जो होगा वो ऑब्वियसली आप लिखेंगे अगर आपको आता है. ठीक है, IMF 2018 report says कि जी पाकिस्तान ranks 3rd among countries facing water shortage, मतलब कि जिनका फ्यूचर ही खतरे में पड़ा हुआ है पानी की किल्लत की वजह से. ठीक है जी, सो
Then I have a point about, let's say, हाँ, बड़ी मेन चीज़ है जो हमें शुरू में ही लिखनी चाहिए, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो अभी आया दिमाग में तो अभी लिखेंगे, and that is के water's importance to Pakistan। इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा डोमेस्टिक सेक्टर और हमारा कमर्शियल सेक्टर कितना डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है that uses according to some statistics 95, कुछ कहते हैं 95%, कुछ कहते हैं जी 96%, but anyway it's a huge percentage। ठीक है, तो agricultural sector utilizes 95 to 96% of the entire water। ठीक है जी। फिर हमारा जो commercial है that is 2%। ठीक है जी। फिर हमारा डोमेस्टिक है that is 2 या 3%। ठीक है जी। और ये जब हम वहाँ पे साइटेशन चाहिए होगी हमें तो वो यहाँ लिख लेते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू द एशिया फाउंडेशन है जी। ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स हैं, उसकी रिसर्च है जिसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। दीज आर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई गेस 2018 के ही हैं। So the Asia Foundation states that Pakistan's agricultural sector is consuming 95 to 96% of its water resources। ठीक है जी। तो हमारी एग्रीकल्चरल बैकबोन है, पानी जो है इट्स लाइक अ बैकबोन। इसी के along the same lines we could also say कि जी कमर्शियल यूज में 80% of our country's exports rely on or depend on water in one way or the other। ठीक है जी। तो 80% of our national exports, और वैसे ही आजकल फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा है, 80% of our national exports depend या rely on water directly या फिर indirectly। So this is something that kind of manifests the importance of water for us। ठीक है जी। थोड़ा सा अपने स्कोप को एक्सपैंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नेशनल यूनिटी की तरफ। ठीक है जी। एक आइडिया है अभी हमारे पास, वो क्या है जी कि हम इसको लिंक किस तरह करेंगे, इसका क्या लिंक बनता है। किसी भी मुल्क में कोई क्राइसिस हो, बेशक वाटर क्राइसिस हो या कोई और, तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, एग्जामिनर ने क्यों ये टॉपिक दिया जिसमें एक तरफ वाटर क्राइसिस लिखा है, दूसरी तरफ आपका जो है नेशनल यूनिटी लिखा है। सो इट्स प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट व्हाटएवर द क्राइसिस it could be overcome through national unity। ठीक है, और ये बात हम हवा में नहीं करेंगे। we would try to quote examples from history। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स हम किस तरह दे सकते हैं? एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं चाइना की, हम दे सकते हैं जापान की, और क्या है चाइना और जापान की एग्जाम्पल्स? ठीक है जी। no matter what crisis a nation is in, national unity can counter it। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा अपने इसको, हम थोड़ा सा प्रूव करेंगे इसको कि कैसे। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कुड यूज एज प्रूफ इन एनी सिचुएशन इन लाइफ इज हिस्ट्री। ठीक है जी। सो लेट्स गेट सम एग्जांपल्स। ठीक है जी। चाइना की क्या एग्जांपल है कि बिकॉज देयर नेशनल क्राइसिस वाज पॉपुलेशन, so how did they overcome it? By national unity। and how did it exemplify in the form of one child policy। ठीक है जी। ये कहना आसान होता है, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट आपको कहे कि जी आपने एक बच्चा पैदा करना है और उससे अगले पे
आपको टैक्स देना पड़ेगा. सो दैट इज समथिंग यू कैन नॉट ओवरकम अनलेस यू आर यूनाइटेड एज अ नेशन. ठीक है जी. फिर जापान की एग्जांपल है हमारे पास. जापान की क्या एग्जांपल है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इट वाज डेवास्टेटेड, दे हैड नथिंग. बट अगर आप आज देखें, ठीक है जी, तो जापान की जो मेटलर्जी है वो दुनिया में सबसे आगे हैं एक तरह से मेटलर्जी में. जापानीज आर वैनगार्ड्स ऑफ मेटलर्जी. ठीक है. उनकी जो स्वॉर्ड होती है, कटाना कहते हैं जिसको, उससे आप दुनिया की कोई भी स्वॉर्ड काट सकते हैं. वो इतनी तेज होती है, इतनी शार्प होती है, इतनी स्ट्रांग होती है. तो दे हैव एज अ नेशन, और उनके पास रॉ मटेरियल कोई नहीं है सरप्राइजिंगली. आज आप कोई भी गाड़ियों की कंपनीज देखें, कुछ भी देखें, कोई अप्लायंसेस देखें, एनीथिंग एट ऑल, Japanese brands are leading the world. ठीक है. And that's because of their quality, that's because of their commitment towards their work. So they as a nation are very advanced. तो मेटलर्जी का उनके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है सच, और सब कुछ इंपोर्ट करते हैं. चीज़ें जो हैं उनके अपने मुल्क छोटा सा है, बट दे हैव ओवरकम अ क्राइसिस थ्रू नेशनल यूनिटी. फिर आप इसमें इवन सिंगापुर कोट कर सकते हैं. ठीक है. उनका जो लीडर था ली कुआन यू, उसने किस तरह उस मुल्क को निकाला बाहर. ठीक है जी. अच्छा, सिंगल हैंडेडली जो मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट एक्चुअली सिंगल हैंडेडली. और अगर आप में से भी किसी को लगता है कि द न्यू प्राइम मिनिस्टर वुड चेंज द इंटायर कंट्री सिंगल हैंडेडली, दैट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि कौम जो होती है एज अ होल, जब तक उन लोगों में एक एहसास ना हो, तो एक बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ना हो जब तक, because that one person too has to rely on other people, and other people, unless they think the same way, they cannot bring a change as a whole. ठीक है जी. तो यहाँ पे देखिए हमारा लिंक बन गया है नेशनल यूनिटी और वाटर क्राइसिस का. ठीक है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की जो थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट आई होप यू रिमेम्बर व्हाट इट इज. और उसमें जो है आपने अगले आने वाले चीज़ों का थोड़ा सा हिंट देना होता है. तो यहाँ इंट्रोडक्शन के साथ में अब आप देखते हैं कि आइडियाज़ की कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है थॉट्स की. बस जो आ रहा है दिमाग में अभी लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लिखने का टाइम है. बस अभी हमारा सिर्फ गैदर करने का टाइम है. तो अगर मुझे एक ऐसी चीज़ याद आई है जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से रिलेटेड थी, तो मैं इंट्रोडक्शन वाले ही ये जो है इसके साथ ही लिख लूंगा. और वो थीसिस स्टेटमेंट क्या मेरे दिमाग में आई है अभी, क्योंकि मेरा टॉपिक वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी है. सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि जब आपके मल्टीपल कीवर्ड्स हों जिनको आपने लिंक करना हो, तो उनका जो लिंक होता है वो आप थीसिस स्टेटमेंट में बनाते हैं, और वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के थीसिस स्टेटमेंट में होती है. तो यहाँ पे मैं क्या एक अच्छा थीसिस स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आया अभी, वो ये है कि नो मैटर व्हाट द क्राइसिस और प्रॉब्लम, national unity is national unity can overcome it. ठीक है. तो ये एक ऐसी थीसिस स्टेटमेंट है. तो इसके शुरू में अगर हम कह दें history has proven that no matter what the crisis or problem, national unity has overcome it. ठीक है. ठीक है जी. Overcome it, solve it, whatever. So what I wanted to stress upon here is that in your thesis statement of the introduction paragraph, which means the last sentence of your introduction paragraph, try to link all the keywords with each other. तो यहाँ पे हमने water crisis और national unity को लिंक कर दिया. तो अब एग्जामिनर को पता होगा कि यार आगे जो बात हुई है अगले एस्से के अगले हिस्सों में किसी भी पैराग्राफ में, उसमें ये पॉइंट आएगा जरूर. क्या पॉइंट? ये पॉइंट कि जी नेशनल यूनिटी और वाटर क्राइसिस को ये आपस में लिंक कैसे करते हैं. ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है. ये हमारे ऑप्शनल 2 हमने बनाए थे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए टॉपिक स्टेटमेंट्स.
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को। अच्छा, अब हमारे पास और क्या है? अब आप अगर गौर करेंगे, इसमें आपका टाइम लगेगा एग्जाम में एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आपके इसमें आइडियाज जॉट डाउन करने में लगने चाहिए। ठीक है, और अगर आप गौर करेंगे तो ये आपका एक तरह से ऐसे भी सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देर नॉट जस्ट पॉइंट्स, ये इन इट सेल्फ सेंटेंसेज हैं जिनको आप जब सही तरह लिखेंगे वहाँ पे एक्सपैंड करके, तो आपका ऐसे बनता जाएगा, आपकी बॉडी बनती जाएगी ऐसे की। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, let's move to the part where we have thoughts related to national unity and water crisis as well, दोनों का लिंक है। वो क्या थॉट्स हैं? अच्छा जी, अब नेचुरली ये जब सारी चीजें बंदा लिख लेगा तो उसके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो ये होगी कि हमारा जो मसला है इंडिया से कितना रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको हम किस तरह यहाँ पे आ, लिखते हैं। ठीक है जी। Oh my god. Okay, fine. Let's move on to another idea, and that is how national unity affects our water crisis. ठीक है जी, how does it affect our water crisis? यहाँ पे आपके पास एक आपका जो है एंटी स्टेट एलिमेंट्स है, एक आपका जो है बलूचिस्तान इंसर्जेंसी है, एक आपका जी केपीके की रिजर्वेशन है। तो जो भी चीज़ें हैं कि डैम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए और इस तरह की जो चीज़ें वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो बलोच इंसर्जेंसी, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, what are they? These are things that are affecting our national unity and in turn giving way to our water crisis. Instead of alleviating a crisis when there is a lack of national unity, ठीक है, तो होता क्या है कि लोग फिर एक होकर नहीं सोचते। ठीक है, हर किसी को अपनी पड़ी होती है। So this all really matters। यहाँ पे हमारे एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी आ जाएंगे जी। ठीक है जी, ये क्या है कि जी जब ब्राह्मदाग की कोई मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इंडिया वाले उसके साथ मिल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट टू फाइंड एनी लूप होल, एनी गैप। ठीक है जी, फंड ग्रुप्स दैट डिस्टर्ब नेशनल यूनिटी। ठीक है जी, यहाँ पे आपका अफगान तालिबान भी एक तरह से आ जाएगा, आपका जो है आजकल तो वो भी आईसिस भी है, और एनी सच थिंग्स। ठीक है जी, इंडिया हो गया, आपका यूएसए हो गया। ठीक है जी, तो और सबसे मेन चीज कि ये सारा मसले, इस सारे फसाद की जड़ क्या है? ठीक है, इस सारे फसाद की जड़ ये है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना, तो उस वक्त के हालात में और अब के हालात में देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो आप देंगे वो ये होगी कि कंपैरिजन ऑफ 1960s पॉपुलेशन वर्सेस एनर्जी डिमांड। ठीक है, फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, 1960 में पॉपुलेशन और एनर्जी कैपेसिटी इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब हमारी आबादी भी बहुत बढ़ गई है एंड वाटर मेजर सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इंडिया हैज स्टार्टेड मेकिंग डैम्स। हम इसी क्लस्टर को यूज करके इसमें थोड़ी सी और चीज़ें भी आप बेशक ऐड कर सकते हैं। हम एक नीट आउटलाइन बनाएंगे एक्चुअली, कि हमने यहाँ पे जो रफ ऑर्गेनाइजेशन थी एक आइडियाज की, उसको हमने
ऑर्गेनाइज किस तरह किए। यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल बने हुए हैं, किसी का कोई आपस में लिंक नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को हम स्ट्रक्चर में किस तरह लाते हैं और उसमें हम टाइम को किस तरह बचाते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम टाइम किस तरह सेव करके इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके एक आउटलाइन बनाएंगे। और जो वो आउटलाइन जो बनेगी उसमें आपकी सारी चीज़ें जो है एक ऑर्डर में आएंगी। फॉर इंस्टेंस कि आउटलाइन का पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें इंट्रोडक्शन वाली बातें होंगी सर, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ हम स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स के लिए रखेंगे, एक पैराग्राफ अगर ज़्यादा हो तो दो पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ हम स्पेसिफिकली सॉल्यूशंस के लिए रखेंगे, एक पैराग्राफ हम स्पेसिफिकली जो जनरल इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, उसके लिए रखेंगे। तो इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको अपने पूरे ऐसे के कंटेंट को।